Hello everyone and welcome back. My name is Ankita and today I am going to talk about a very powerful technique to cleanse your system, to detoxify your system, or to heal from a disease, or to simply improve your immunity. This technique was even given a Nobel Prize in the year 2016, and to my surprise, this technique has been existing in India for so long. Our sages knew about it even 5,000 years back. Fasting. It is not about starvation. Those who have apprehensions about it, I would request you to watch this video till the end. Try it for a week and then you're free to choose. Because मुझे ये टेक्निक पता नहीं थी कि इतनी पावरफुल है। 3-4 साल पहले मुझे कोई फास्टिंग करने के लिए बोलता तो मेरा थॉट प्रोसेस एकदम अलग था, बिकॉज आई यूज टू थिंक एक ही लाइफ मिली है, खाओ पियो मज़े करो, फास्टिंग इज़ ऑफ नो यूज़. बट यू नो, fasting has been there in every religion. The purpose was very noble, that is to detoxify your system. When you talk about Hinduism, नवरात्रि साल में 2 बार रखते हैं, बट अगेन वी हैव मेड इट अ करप्ट प्रैक्टिस. नॉर्थ इंडिया में तो 8 दिन का फास्ट रख के 9th डे हलवा पूरी और हैवी चीज़ें खाई जाती हैं. Muslims are heavy meat eaters, so 9 days are insufficient for them. They usually fast for 1 month, which is known as Ramadan. People tend to overeat or eat the wrong way due to wrong methods of fasting. Nobel Prize Winning Technique was based on the concept of autophagy. Auto means self, phagy means to eat. It is body's way of cleaning so that one regenerates newer and healthier cells. The body degrades and recycles the damaged cells. So it is cleaning and recycling at the same time. Let's talk about intermittent fasting. This is no rocket science, to be honest. दिन बना होता है 24 घंटे से. एक हेल्दी इंसान को भी अपने डिनर और अपने ब्रेकफास्ट में कम से कम 12 घंटे का गैप कॉन्शियसली रखना चाहिए. This is basically intermittent fasting. The longer you do, the better it is to detoxify your system. Let's suppose you had your dinner at 8 PM in the evening. अगर आपने अगले दिन 8 बजे तक कुछ नहीं खाया तो आपका 12 घंटे का गैप हो गया. Similarly, till 9 AM, it's a 13-hour gap. 10 AM, it's a 14-hour gap. 11 AM, it's a 15-hour gap. And at 12, it's a 16-hour gap. आपने वैसे भी सुना होगा, कहते हैं डिनर करो भिखारी की तरह. इसका मतलब यही है कि जब सूर्य ढल जाता है, आफ्टर सनसेट, योर डाइजेस्टिव फायर, योर जठर अग्नि बिकम्स वीक. तो जो हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट होने में परेशानी होती है एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स become toxins. This technique has shown to fix everything and it has potential to cure any problem. I'll give you one simple example. अगर fracture होता है तो we give it a plaster for about 6 weeks. Plaster has got no medicine at all. It is body's own healing power. आपके अंदर का डॉक्टर उसे अपने आप सही करता है, provided you give it enough rest. I can guarantee that the disease you thought can never be cured will vanish. Even a 50-year-old disease will start reversing itself. Not immediately though, and at the same time, one needs to eat mindfully. The body has got prana shakti, which can either digest the food or it can focus on healing. By eating continuously, we disturb it. So it leaves healing and focuses on digestion. Stomach is constantly put to work and whatever energy you are producing goes into digesting it. 70% of the energy produced is utilized in digestion and 30% in other activities. ये काफ़ी आसान होने वाला है क्योंकि जब आप खा नहीं रहे हो तो रात को आप सोने वाले ही हो. Little healing happens every day. And healing is basically the resting time you are giving to your own body ताकि वो अपने आप को अंदर से रिपेयर कर पाए, rejuvenate कर पाए. This has been proven to be the best medicine in the world.
because when you're not eating, the body self heals. Our gut is our second brain. Most of the diseases begin in the gut. Ayurveda says the same thing, and the father of modern medicine, Hippocrates, also said the same thing. हमारी आंतें साफ नहीं होती तो बीमारियां पैदा होती हैं. आपकी आंतों में एक सीमेंट की तरह एक लेयर जम जाती है, डिपॉजिट्स जम जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं. और ऑटोफेजी में ये देखा गया है कि ये सीमेंट की लेयर भी अपने आप इट हेल्प्स इन क्लेंजिंग द इंटेस्टाइन्स. वेट लॉस, विच इज़ द मोस्ट sought after goal in the world. This technique also removes extra fat from the cells, thereby making it perfect for weight loss. एंड ऐसा नहीं है जिसको वेट गेन करना है वो नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. जो आंते हैं वहाँ पे ये सीमेंट वाली लेयर जमी है, जिसकी वजह से नीचे से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, जो खा रहे हैं वो लग नहीं रहा शरीर को. इट रिप्लेसेस ओल्ड, डैमेज्ड, डेड सेल्स and rebuilds the tissues. Today, hair fall, lower libido in both man and women, hormonal imbalance has become so common. So this technique has also proven effective to regulate your hormones. It has potential to even break cysts. It can even dissolve kidney or gallbladder stones. किसी को एयरवेज का प्रॉब्लम होता है, जैसे सांस अच्छे से नहीं लिया जाना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा, साइनस, माइग्रेन्स, उन प्रॉब्लम्स में भी ये फ़ायदा करता है. इट रिमूव्स द ब्लॉक्ड एयरवेज. ऑल्सो इट क्लियर्स द प्लाग बिल्ट अप इन द आर्टरीज. आर्टरीज से खून पास होता है, वहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर की तरह एक रुकावट पैदा हो जाती है, जिसको बोलते हैं प्लाग. सपोज दिस इज योर आर्टरी, यहाँ पे ये प्लाग जम गया. इस प्लाग को डिसॉल्व करने में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प करता है. इट पुल्स आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम एवरी ऑर्गन एंड इट पुशेस आउट थ्रू स्टूल, यूरिन, स्वेट और ब्रेथ. अगर किसी को नया नया प्रैक्टिस करने में परेशानी भी हो रही है तो प्लीज़ घबराना नहीं. जब आप इंटरमिटेंट फास्ट कर रहे हो, आप पानी पीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. और अगर लगता है कि नहीं पानी से काम नहीं चलेगा तो छोटा मोटा फ्रूट भी खा सकते हो, so that's to satisfy your hunger pangs. As I mentioned earlier, fasting is not about starvation. Please listen to your own body and respect the signs it is giving you. Be kind to your body. जैसा आप उससे बात करोगे वैसा ही वो आपका कहना मानेगी. Be kind to your body, but at the same time, please do step out of your comfort zone, because one cannot grow or heal without stepping out of comfort zone. Let me give you one more simple example. रोड साइड पर जब चाय पीने जाते हैं, चाय की टपरी पर, आपने देखा होगा टेस्टी तो वो बहुत लगती है, इवन 5 स्टार से ज़्यादा भी, जबकि 5 स्टार की चाय में और रोड साइड में बहुत पैसे का अंतर होता है. लेकिन टेस्टी रोड साइड वाली लगती है, जबकि आप उसका सॉस पैन, उसका पतीला देखेंगे तो वहाँ पे पूरे एक गार्बेज की एक परत जमी होती है. घर पे हम बहुत स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, काम वाली को भी डांटते हैं, और अगर खुद करते हैं तो भी वी मेक श्योर दैट द यूटेंसिल इज़ वेरी क्लीन, बिकॉज नहीं तो नेक्स्ट कुछ जब बनाने जाएंगे, जो भी डिश बनाने जाएंगे, इट कैन कंटामिनेट, और कंटामिनेट होगी तो हेल्थ इश्यूज आएंगे. योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एग्जैक्टली द सेम. आप जो खाते हैं, आपने रॉ मटेरियल दिया, न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, दैट हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द सिस्टम ऑन डेली बेसिस. कुछ लोगों को 10 से 15 मिनट तक लग जाते हैं पेट साफ करने में, बट देन ऑल्सो सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट देयर. आंतों में जो ये गंदगी जम जाती है, यही दिखाती है हाउ फास्ट वी आर गोइंग टू एज. एंड एज वी एज, this cement like thing becomes indestructible. My suggestion to anyone who wants to start intermittent fasting, please don't immediately start with 16 hours. You will be shocking your body. Start with 12 hours. फिर next week 13 hours. देखिए आपकी body कैसे behave कर रही है. Are you enjoying the process? Let's glance through some numbers. अगर कोई 16 घंटे फास्टिंग स्टार्ट करता है तो एक वीक में आप अपनी बॉडी को
112 हीलिंग आवर्स दे रहे हैं। एक महीने में 450 हीलिंग आवर्स। In 3 months, you are giving 1500 healing hours to your body. जब आप बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो कुछ सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन्स, हेडेक्स या फिर इवन लूज मोशन। इसको आयुर्वेद में उभाद कहते हैं कि बॉडी, दिस इज़ नथिंग बट द स्टैग्नेंट टॉक्सिन्स इनसाइड योर सिस्टम हैव स्टार्टेड सर्कुलेटिंग और वो गंदगी शरीर से बाहर निकल रही है किसी फॉर्म में। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल वरीसम। लेट योर सिस्टम रीबूट और उसको कंडीशन होने देंगे एंड यू विल सी मिरेकल्स हैपनिंग in a very short span of time. By eating timely, you are activating the pran shakti of your body and you are giving your body enough rest so that it can self-heal. If you like this content, do give a thumbs up. आप comment box पे नीचे comment भी कर सकते हो and please do subscribe to the channel. Thank you so much for watching. What we're doing here is reversing all of type 2 diabetes and all its downstream complications with fasting. It's very different than when someone simply cuts calories. Fasting was 6 times better at getting rid of the dangerous fat. Probably the number one thing that I noticed is weight control. I went 7 days and lost 20 pounds. I lost 40 pounds. I never gained it back. I've lost close to 100 pounds and still counting. You actually can work out harder than you've ever done. I've always worked out on an empty stomach in a fasted state. I was taking 210 units of insulin a day. I haven't had insulin since. And now think about the fact that 100 million Americans are either diabetic or pre-diabetic. They don't have this type 2 diabetes problem anymore. That's all they need to do. It saved my life. It's like better than medicine. There's nothing in medicine today that can induce these effects. I was on medication for high blood pressure as well as for cholesterol. And 2 weeks later, she came in and her blood pressure was normal. And I'm no longer taking a statin drug. So your fatty liver is completely reversed. Anti-inflammatory. A host of autoimmune diseases. And that was in 2010, and I haven't had a headache since. It's really not a medical condition because it's totally reversible. The 3 most influential people in the history of the world, Jesus Christ, the Prophet Muhammad, and Buddha, probably only agreed on one thing, and that was the power of fasting. Fasting is an essential part of our Christian faith. Christ taught it by his own example. I need to tell everybody about the fasting. I need to tell everybody because I think it's going to save sanity. I think it's going to save lives. At least in my fasting cycles are as powerful as chemotherapy. Continued to see that lump diminish until now it's gone. No cancer. For 21 years, I have been cancer-free. The challenges about fasting is that there's a lot of misinformation out there and there are several different types. You know, whether you're talking about an overnight fast, or you're talking about a 24-hour fast, or you're talking about 5-day or 10-day or 20-day, people and journalists and everybody likes to use the same word, right? And this is very confusing because each turns on a completely different process.